Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? And in today's video we are going to talk about two brush sets that I got from Amazon. Right, I have tried them. I did my makeup, this whole face, the base and the eyes, and even the lips a little bit. I did using that brush set, those two brush sets actually, which is, yeah, some of them are over here, some of them are lying niche. So yeah, without any further ado, let's get into this video. Let's go. I will link both of these brushes in the description box if you want to buy them, so do check that out. Okay, so we have two sets over here. One is this and one is this, right? So let me show you how they look. Is it even a Himanshi Vashisht video unless something falls down? This is set number one, right? With a holder, and I think we have like 10 brushes over here. And then there is the next set. It does not have a holder. मुझे holder की 36 holder की ज़रूरत भी नहीं है. So डब्बे फेंकते हुए, this is the next set of brushes that we have. So both of these brush sets belong to a company named BH Studio Pro Makeup Brush Set. Now obviously if you will see over here, they have this BH Cosmetics ka logo, which is a total rip-off. Like ye BH Cosmetics nahi hai. This is some Indian company who ripped off that whole BH Cosmetics का aesthetic, but they just changed the name to BH Studio ताकि वो BH Cosmetic का वो रहे लोगों को, but nobody sues them for copying the company's name. So that is that, right? So ये this one is a set of 13 brushes in black color. Like ये वाला set 485 rupees का था. Oh, मुझे लगा था ये वाला महंगा है. नहीं, ये सस्ते वाला है, only for 485, and a set of 13 brushes. So there is this one fan brush. ये मुझे अच्छा लगा इसकी. Wow, I am a kid. Then we have this one, which is a tapered powder brush. This is for your powder situation, right? Then we have a small contour brush, which is this one. I really wanted a small contour brush. Yep. Okay. Then we have a flat top buffing brush. I'm having a minute because I am extremely short-sighted. और मेरा phone मुझसे दूर हो रहा है. So this is a flat top buffing brush. I do have a brush like this already from a set बहुत पहले वाला. See, these are very similar. Yeah. So this is that brush where you buff stuff, right? बहुत सारा plastic है इसके साथ. I absolutely hate this quantity of plastic which is with every brush. There is a lot of waste over here. Okay, then we have a pointed crease brush. Wow, I have to find these brushes. Okay, pointed crease, small pointed crease. ऐसे ये दो तीन brushes हैं जो एक जैसे हैं. I think ये pointed crease और small pointed crease, और my god. And then there is a blending crease brush. ये इनमें से कोई एक small क्रीज ब्रश है, एक स्मॉल पॉइंटेड क्रीज ब्रश है, एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है. इनमें से कोई एक ऐसे सिचुएशन में है जो मुझे इस पिक्चर से पता नहीं लग रहे. आई एम अ बिट देयर. सो देयर इज दिस वन फ्लैट शेडिंग ब्रश, ये जो आपकी लाइक शिमर्स और सबको पैक करने के लिए होता है. दिस इज दैट. दिस इज अ बिग फ्लैट शेडर ब्रश, और देन देयर इज दिस स्मॉल फ्लैट शेडर ब्रश. देयर इज दिस बेंट एंगल ब्रश फॉर लाइनर, पर इसके ना ब्रिसल्स, इफ़ यू विल सी, आई डोंट नो इस वाले कैमरा में ये दिखेगा कि नहीं बिकॉज ये फ्रंट कैमरा है, पर अगर आप देखोगे ना आपको यहाँ दिखेगा कि इसके ब्रिसल्स थोड़े इधर उधर हो रहे हैं. सो आई डोंट नो इफ दिस वुड एक्चुअली गिव मी अ गुड प्रिसाइज विंग, बट या यू डू हैव दिस. एंड देन वी हैव एन आईब्राउ ब्रश, यू नो पॉइंटेड विद स्पूली, which is again nice. Okay, this is a brush, like ये इस तरह से आया है, right? You will open it and this will be your lip brush and you can just make it like this. I really like this thing. पर ये I think इतना ही है, compact है, and I really like that. And then we have this flat eyeliner brush, which is for your eyeliner situation. Okay. Yeah, it took me a minute to really figure out each of these brushes. Although मैं इस सेट में से सारे के सारे ब्रश ट्राई नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल रियली ट्राई टू गिव यू एज मच एज आई कैन. फटाफट से लेट मी जस्ट गिव यू द टी ऑन द नेक्स्ट सेट, बिकॉज वो थोड़ा महंगा था.
And I kind of like that one better in terms of aesthetic and cuteness. Like I really like these bright color set. So this one is a neon green and इसी के साथ एक neon pink में भी है, which looks like ऐसा ही same एक pink में भी है. So you can see that. This is a set of 10 brushes with a holder और ये 674 rupees का था. For some reason मुझे लगा था कि ये सस्ता है और मैं सोच रही थी कि ब्रश के होल्डर के साथ ये सस्ता कैसे हो सकता है, बट नहीं. एंड आई डू फील कि इनमें ब्रश की क्वालिटी, लेट मी जस्ट कंपेयर टू ब्रशेस टू नो कि इनमें से बेटर क्वालिटी किसकी है, या फिर सिर्फ इसलिए महंगा है क्योंकि ये दो बिल्कुल एक जैसे ब्रश हैं. इसका ये ब्रिसल बाहर आ रहा है, विच इज़ रियली बैड. दिस वन इज सॉफ्टर. या दिस वन इज बिट सॉफ्टर इन कंपेरिजन टू दिस. सो ये अगर थोड़ा सा महंगा है तो यू कैन सी दैट प्राइस का डिफरेंस टोटली. एंड ये ग्रीन कलर में है, राइट. सो अगेन इफ यू लाइक ब्राइट कलर्स यू वुड रियली लाइक दिस. इसके अंदर है 10 ब्रशेज ओनली. सो फर्स्ट ऑफ वी हैव इज अ डीलक्स angled powder brush, which is this, you know, for your powders and blush situation. Then we have a foundation buffing brush, which would be this. No, this is a tapered powder brush. This is the tapered powder brush, you know. इस वाले सेट के अंदर ये एक बड़ा पाउडर ब्रश था और इसके अंदर ये छोटा पाउडर ब्रश है. So you know, according to your preferences, बड़ा छोटा you can try. Okay, this is this. Then we have foundation buffing brush, which would be this. Okay, so this is like that kabuki brush, thoda sa upar se flat hai, and you just apply your foundation with this, right? Then we have a dense buffer blush, which is this one. This one is a dense brush for your contour situation, right? That is that. Then we have a highlight brush, which should be this. Yeah, this is a highlighting brush for highlighting. And this is a tapered blending brush, and ye toot gaya. You see, ye toot gaya. Well, not the best quality, I would say, but yeah, this is this is quite big. Then we have a flat shading brush, you know, बिल्कुल सेम उस वाले सेट में जैसे दो फ्लैट शेडिंग ब्रश थे, सेम इसका ये भी उस तरह का एक फ्लैट शेडिंग ब्रश है. Then we have this one एंगल्ड डिटेल ब्रश. ये थोड़ा एंगल डिटेल वाला है, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई डिटेल होएगी. इस वाले सेट के अंदर जितने भी आई मेकअप के ब्रश हैं ऑलमोस्ट सारे एक जैसे से ही हैं. एंड यू विल सी, यू विल नॉट फाइंड मच फॉर द आई मेकअप सेक्शन. यू माइट फाइंड सम गुड ब्रशेज फॉर योर बेस मेकअप बट नॉट आई मेकअप. लेट मी जस्ट डू सम मेकअप विद दिस एंड देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स. ओके. Okay, so I have tried both of these brush sets now, and let me tell you what I've really concluded is, like मैंने काफ़ी सारे ब्रश अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश की है, तो देयर वर सो मैनी, मैं सारे ट्राई नहीं कर सकती थी. बट व्हाट आई हैव रियली अंडरस्टूड इज दैट दीज आर लाइक टू स्पेसिफिकली डिफरेंट ब्रश सेट्स. दिस ब्लैक वन आई वुड से कि दिस इज अ लिटिल बिट मोर, लेट्स से, मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ अ थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ब्रश है ना, अगर आपके पास कोई ब्रश सेट नहीं है और आप फिर इस वाले को बाय करते हो, आई थिंक आपका काम चल जाएगा. दैट इज़ द थिंग अबाउट दिस वन कि इफ़ यू जस्ट डोंट हैव एनी अदर ब्रश, यू जस्ट हैव दिस वन सेट और ये आपका काम सॉर्ट कर देगा. यू डोंट नीड टू बाय एनी मोर. दिस वन ऑन द अदर हैंड, दिस इज़ मोर लाइक अ ब्रश सेट. आप
को मैं कहूँगी तब बाय करो व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ ब्रश सेट और आपको सिर्फ बैकअप में कुछ एक ब्रशेस चाहिए जो आपकी हेल्प कर सकें। अगेन, अगर आपको कोई भी ब्रश सेट खरीदना है, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिगर आउट कि आपको क्या चाहिए। लाइक अगर आपको कॉन्टोरिंग के लिए चाहिए था, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे ब्रश चाहिए थे जो स्पेसिफिकली कॉन्टोरिंग, ब्लश और थोड़े से आई मेकअप के लिए, तो मेरे लिए ये दोनों सेट बिल्कुल बढ़िया थे बिकॉज दे रियली हेल्प्ड। ये वाला आई मेकअप और बेस मेकअप दोनों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें हर तरह का ब्रश है, ठीक है। दिस वन आई थिंक इसके जो ब्रश है ना काफ़ी हद तक सिमिलर हैं आई मेकअप वाले, बट बेस मेकअप के लिए अच्छे हैं, डिफरेंट हैं। हर तरह का आपको बेस मेकअप के लिए एक ब्रश मिल जाएगा। सो बेस मेकअप के लिए दिस वन वुड बी इट, बेस और आई दोनों के लिए दिस वुड बी इट। सो एज आई सेड, अगर आपके पास कोई ब्रश सेट नहीं है, गो विद दिस वन। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपको सिर्फ बैकअप में और ब्रश चाहिए, देन गो विद दिस वन। I hope you understood what I mean. Okay, so yes guys, this is it for today's video. ये already काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी तो मैं फटाफट इसको wrap up कर रही हूँ, right? If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel if you haven't already. I'll meet you in the next video guys. Bye bye.